Good afternoon students, welcome to today's video lecture of integrals. We were solving the subjective type questions which can come in JEE mains and boards for integrals. तो वैसे last type standard जो बाकी है, let us finish off that and then I will start with the chapter vectors because I want to finish all these types and then I will start. And today I believe I will finish all because of the other types रहते नहीं है. Integration of 1 upon question लिखो integration of 1 upon x minus 1 raised to 3 into x plus 2 whole raised to 5 whole raised to 1 by 4 1 dx. Okay, this is the equation 1 upon. तो इसको क्या करने का I is integration of 1 upon 1 by 4 दोनों को पावर दे दो. So x minus 1 whole raised to 3 whole raised to 1 by 4 into x plus 2 whole raised to 5 whole raised to 1 by 4. This is obvious. So I आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो. Try to identify this. ये टाइप है लीनियर x minus 1. ये होगा एक लीनियर रेस को फ्रैक्शन 3 by 4 into another लीनियर और उसका पावर भी एक फ्रैक्शन होगा. और स्पेशलिटी क्या है? सम ऑफ द पावर्स. लीनियर का पावर एक फ्रैक्शन, लीनियर का भी पावर एक फ्रैक्शन और इधर सम ऑफ द पावर्स. Here 3 by 4 plus 5 by 4 will be 2. Sum of the powers will be 2. Okay, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि sum of the powers 2 होगा. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या करना है? It will be a linear 1 upon linear raised to positive proper fraction. दूसरा होगा 1 upon ये क्या है? 1 upon linear raised to positive fraction. Another linear raised to positive fraction. और यहाँ पे इसका पावर है 3 by 4 और यहाँ पे इसका पावर है x by 2 का 5 by 4. तो what is the sum of the powers? 2. So sum of the powers is 2. तो क्या करेंगे इधर? What I will do is that इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? I is integration of 1 upon what to write? पहले x minus 1 लिख दो. x minus 1 whole raised to 3 by 4 upon दूसरा लीनियर कौन सा है? x plus 2. तो उसके नीचे वो लिख लो x plus 2 raised to 3 by 4. ओके, इनटू यहाँ पे x plus 2 कैंसिल करने के लिए x plus 2 raised to 3 by 4 और ऑलरेडी हमारे पास क्या था? x plus 2 whole raised to 5 by 4 1 dx upon. You understood? मैंने क्या किया? मैंने लीनियर कौन सा प्रेफर किया? x minus 1. So x minus 1 raised to 3 by 4 लिखा मैंने. x minus 1 raised to 3 by 4 upon x plus 2. दूसरा लीनियर क्या है? x plus 2. उस x plus 2 को x minus 1 का पावर देंगे. So x minus 1 raised to 3 by 4 upon x plus 2 raised to 3 by 4. ये कैंसिल करने के लिए चलेगा x plus 2 into raised to 3 by 4 और x plus 2 raised to 5 by 4 तो है ही. So this becomes now 1 upon, this is in the form of x minus 1 upon x plus 2 whole raised to 3 by 4. यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा? बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा. So x plus 2 raised to 3 by 4 plus 5 by 4 1 dx. Okay, अब see the magic what will happen. ऐसा होगा you might not understand but this now will be clear to majority of the students. की पावर ऊपर चला जाएगा. ये फ्रैक्शन को आप ऊपर ले जाओ. सुपर अप this will become x minus 1 upon x plus 2 x minus 1 upon x plus 2 whole raised to minus 3 by 4 into 1 upon x plus 2 raised to क्या आएगा? 3 by 4 plus 5 by 4 क्या है? dx. And you know ये सब कैसे सॉल्व करने का? x minus 1 upon x plus 2 को आप t ले लो. x minus 1 upon x plus 2 को आप t ले लो. तो क्वोशिएंट को लगा देगा x minus 1 upon x plus 2 take as t. When you differentiate लेफ्ट में क्या आएगा? क्वोशिएंट मिल जाएगा तो 1 upon x plus 2 का होल स्क्वायर वो dt में चला जाएगा dx. So differentiating so d by dx of x minus 1 upon x plus 2 which is equal to d by dt of t. ऐसे होता है मतलब लेफ्ट में होता है with respect to x और राइट में होता है with respect to t. और ऐसा होगा तो I will solve one more such question which will help you. So therefore यहाँ पे आप क्या लगाओगे? क्वोशिएंट रूल. So उसका डेरिवेटिव में क्या आएगा? x plus 2 into derivative of x minus 1 is 1 minus
x minus 1 into derivative of x plus 2 is 1 whole upon x plus 2 the whole square differentiation over dx. Derivative of t with respect to t is t, differentiation over so dt. अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, what will happen? Maximum एक नंबर अगर होगा, so this will be 1 into so x plus 2 x आगे minus minus x minus 1 plus 1 okay whole upon x plus 2 the whole square dx is equal to dt or 1 dt to write 1 dt. So if try x gets cancelled, so 3 upon x plus 2 the whole square dx is 1 dt. उधर था 1 upon x plus 2, so 1 upon x plus 2 the whole square क्या हो गया? 1 upon x plus 2 the whole square हो गया 1 by 3 dt. So therefore 1 upon x plus 2 the whole square dx it became 1 upon 3 dt. Very simple. And x minus 1 upon and x minus 1 upon x plus 2 क्या था? t. तो हमारा क्वेश्चन आई क्या था? इंटीग्रेशन हमने चेंज किया था x minus 1 सिंप्लीफाई करके x minus 1 upon x plus 2 whole raised to 3 by 4 into 1 upon x plus 2 the whole square dx t raised to minus 3 by 4 into 1 by 3 dt. Finished. सबस्टिट्यूट कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा. So this is a very popular type which is coming in mains as well board exams. So I is integration of minus 3 by 4. Therefore I becomes integration of t raised to minus 3 by 4 into 1 by 3 dt. 1 by 3 is constant, so outside the integration, so 1 by 3 integration of t raised to minus 3 by 4 dt. X raised to n का integration x raised to n plus 1 upon n plus 1. So t raised to minus 3 by 4 plus 1. 1 by 4 upon 1 by 4. So therefore I becomes 1 by 3 t raised to 1 by 4 t raised to 1 by 4 upon 4 मतलब into 4 plus c. So answer is I is 4 by 3 t raised to 1 by 4 plus c. Okay, so t है x minus 1 upon x plus 2. So that's the final answer. Clear? Let me give one more question based on this. Here t is x minus 1 upon x plus 2. So therefore I becomes 4 by 3. I becomes 4 by 3 into, therefore I is 4 by 3 into t is x minus 1 upon x plus 2 raised to 1 by 4 plus c. So now this finishes the answer of this question. Second, अगर क्वेश्चन वैसा ही मुझे सॉल्व करना है तो 1 upon क्या होना चाहिए? 1 dx upon linear का पॉजिटिव 1 upon, let me write the question, suppose x minus 1 raised to 3 by 2 into x minus 2 raised to half. So 1 upon x minus 1 raised to 3 by 2 into x minus 2 raised to half. So what I will do now? What I will do here? Sum of the powers. ये टाइप वैसा ही है जो अभी मैंने आपको सिखाया. 1 upon linear का पावर 3 by 2, x minus 2 का पावर 1 by 2. So 1 upon linear raised to positive fraction and linear raised to positive fraction. And sum of the powers कितना है? 2. So 3 by 2 plus half कितना होगा? Here 3 by 2 plus half आप चेक करो. 3 by 2 plus half. 3 plus 1 by 2 which is 4 by 2 is 2. So हमारा टाइप का इक्वेशन है therefore 3 by 2 plus half is 2. Here that is understood. So this is our type question. मतलब ये अभी जो मैंने आपको टाइप सिखाया उस टाइप का ये क्वेश्चन है. तो आप कैसे सॉल्व करोगे? Therefore I is equal to integration of 1 upon पहला लीनियर कौन सा है? x minus 1. So I will write x minus 1 raised to 3 by 2. नीचे क्या करूंगा? दूसरा जो लीनियर है x minus 2 उसको भी मैं x minus 1 का पावर
दे दूंगा, पर ये कैंसिल करने के लिए हमको यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा x माइनस टू रेज टू 3/2 और ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था x माइनस टू रेज टू हाफ, तो इन दोनों का पेयरिंग हो जाएगा 1 dx, सो दैट इज 1 dx। ना तो पता है a रेज टू n अपॉन b रेज टू n क्या होता है a by b होल रेज टू n, a रेज टू n अपॉन b रेज टू n क्या होता है a by b होल रेज टू n। So this becomes I becomes integration 1 upon x minus 1 upon x minus 2 whole raised to 3/2 और बेस से अगर पावर ऐड हो जाएगा so x minus 2 raised to 3/2 plus half। You can also write x minus 2 upon x minus 1, it's your choice, ठीक है, it's your choice। Try to get the answer before me। So I is integration of ये पावर को ऊपर में चला जाएगा फ्रैक्शन, ये कितना हो जाएगा x minus 1 upon x minus 2 raised to minus 3/2 and this becomes 3/2 plus half is 2, so 1 upon x minus 2 का square dx। Now you know इसको लेना है x minus 1, let x minus 1 upon x minus 2 is t। डिफरेंशिएट करो, डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग लेफ्ट में आपको क्वेश्चन रूल लगाना है। So you understood? This is you can say a very typical type which you must identify and solve। See, integration is a very vast topic to solve। जितना भी हम सॉल्व करेंगे उतना कम है। Differentiating left में with respect to x, so x minus 2 into derivative of x minus 1 which is 1 minus x minus 1 into derivative of x minus 2 is 1। x minus 1 में x is derivative of x with respect to x is 1 is constant, उसका derivative 0, derivative of x minus 2 में x का derivative with respect to x 1 और 2 constant, उसका derivative 0, नीचे आएगा x minus 2 the whole square। Okay, differentiation over with respect to x, dx is 1, derivative with respect to t, t का derivative with respect to t 1 होता है, over the brackets x minus 2 1 into x, x minus x minus 1 plus 1 is plus 1 whole upon, be very careful, x minus 2 the whole square and then dx is equal to 1 dt, x is cancelled, so minus 1 upon x minus 2 the whole square dx is 1 dt। मुझे सब्स्टिट्यूट करना है 1 upon x minus 2 the whole square। I want to substitute 1 upon x minus 2 the whole square, तो उस लॉजिक से मतलब therefore 1 upon x minus 2, therefore 1 upon x minus 2 the whole square dx क्या आया minus 1 dt। तो हमारा क्वेश्चन था, our question reduces to and x minus 1 upon x minus 2 t था, तो I तो क्वेश्चन था हमारा x minus 1 upon x minus 2 whole raised to minus 3/2 into 1 upon x minus 2 the whole square dx, so that is t raised to minus 3/2, that is t raised to minus 3/2, that becomes t raised to, so I इसमें कन्वर्ट हो गया, so I is integration t raised to minus 3/2 into minus 1 dt, minus 1 outside the constant, so therefore I becomes minus 1 integration of t raised to minus 3/2 dt। ठीक है, अब x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x raised to n plus 1 upon n plus 1, so I is minus 1 into t raised to minus 3/2 upon 3/2, so t raised to minus half हो जाएगा, t raised to minus half upon minus half plus c, so I is minus plus 2 times, so I is minus okay, ये minus 1, so here we are left with minus 1 into minus 2 into 1 upon t raised to half plus c, t raised to minus half here, and then the final answer 2 t raised to minus half plus the value substitute, so
that is the final answer. Therefore I is 2 times t raised to minus half plus c. So I is t कितना था? Here t is x minus 1 upon x minus 2. So this becomes okay. Now therefore I becomes integration 2 times x minus 1 upon x minus 2 raised to minus half plus c. ओके ओके, अब ये आंसर भी है दूसरा, सपोज नेगेटिव फ्रैक्शन में है माइनस हाफ, पर अब इधर आपको ये भी याद होना चाहिए एंड नाउ a by b होल रेज टू माइनस n क्या होता है? b by a होल रेज टू n. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस n अगर है a by b होल रेज टू माइनस n है, तो अगर आप सोचोगे तो a रेज टू माइनस n अपॉन b रेज टू माइनस n, सो b by a होल रेज टू n. इसी आंसर को समटाइम्स 2 टाइम्स 2 ग्रेटर में आता है तो x minus 1 upon x minus 2 रेज टू माइनस 1, जस्ट फ्लिप इट x minus 2 upon x minus 2 upon x minus 1, 2 टाइम्स ये हो जाएगा x minus 2 upon x minus 1 और n becomes minus n becomes plus n, n की जगह पे यहाँ पे क्या है? हाफ, तो becomes हाफ प्लस c, और हाफ का मतलब क्या हो गया? 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 upon x minus 1 plus c raised to 2. This answer is acceptable. It's acceptable. You leave it over here. MCQ है, subjective है, you leave it over here, no problem. MCQ है, यहाँ तक सीखना है, ये आपको लेते हैं, whichever is the option. Okay, now one more question is there, which is I is integration of. Okay. One more question is there. Okay, now see this question also. This is not our type जो अभी मैंने आपको सिखाया. This is totally a different type. 1dx whole upon x minus 1 raised to half x minus 1 raised to half into x minus 2 raised to half. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 1 upon है x minus 1 linear raised to a fraction, अब दूसरा into linear raised to fraction. Agree? पर half plus half क्या है? half plus half is 1. तो ये वाला मेथड जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे नहीं लगा सकते, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा. हियर अब क्या याद रखो, half plus half is 1. So we cannot apply the method which I applied in question number 1 and question number 2. Now what is x minus 2? X minus 2 is, can I write as x minus 1 minus 1? Yes or no? So इधर x minus 2 is x minus 1 minus 1. तो x minus 1 को यहाँ पे raised to half मतलब वो स्क्वायर रूट हो गया, और आप क्वेश्चन में दिया होगा x is greater than 2, x is greater than 2 ऐसा दिया होगा. yes, अगर greater than 2 है तो greater than 1 भी होगा. तो क्या करने का, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूँ. So therefore I is integration of 1 upon square root of x minus 1 into square root of x minus 2. 1 means, so let x minus 1 is equal to sec square theta. Let x minus 1 is equal to sec square theta half. What is the technique of this question? Linear raised to fraction, linear raised to half ही होगा. Linear raised to half, linear raised to half, और इन दोनों के बीच में गैप 1 होगा. x minus 2 क्या है? x minus 1 minus 1, और दोनों का पावर क्या होगा? दोनों का पावर हाफ होगा. और यही क्वेश्चन को वो लिख के दे सकते हैं 1 अपॉन होल स्क्वायर रूट ऑफ x minus 1 into x minus 2. तो x minus 1 को sec square theta लिखो. So differentiating x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट 0 dx sec square theta का 2 sec theta into डेरिवेटिव ऑफ sec theta क्या होता है? sec theta tan theta. ओके, differentiating लेफ्ट में कितना है? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 minus 0 into dx fx raised to l. So 2 times sec theta into derivative of sec theta is sec theta tan theta. So d theta. So dx कितना है? So 1 dx न्यूमरेटर में है 1 dx वो हो गया 2 sec square theta tan theta d theta. Very clear. और this is a very nice question जो आ चुका है काफी बार. Now here
here x minus 1 क्या है? x minus 1 is sec square theta. हमको सब्स्टिट्यूट करना है x minus 2. तो x minus 2 is x minus 1 minus 1. So therefore x minus 2 is what I will write? Sec square theta minus 1. What is sec square theta minus 1? Tan square theta. So x minus 2 becomes tan square theta. X minus 2 becomes tan square theta. So substitute कर दो आप. So therefore x minus 2 is tan square theta. अब हाँ, जब हमने ये substitution किया है, square है, and suppose you don't know many conditions, presume it in the first quadrant. So 0 less than theta less than pi by 2. You can take that way. 0 less than theta less than pi by 2. Now, I कितना है? I is integration of 1 upon square root of x minus 1 into square root of x minus 2 1 dx whole upon. तो आप देखो x minus 1 क्या था? sec square theta. x minus 1 था sec square theta. So I is 1 dx. 1 dx is 2 sec square theta tan theta d theta whole upon square root of what is x minus 1? X minus 1 था sec square theta and what is x minus 2? Tan square theta. Now here 0 less than theta less than pi by 2. तो उसका मतलब तो अगर पूरा डिटेल में लिखना है तो ये मॉड आएगा, मॉड ऑफ sec theta, मॉड ऑफ tan theta. अगर अच्छी तरीके से किसी को डाउट ना हो और समझना है, so I will be integration to sec square theta tan theta d theta whole upon. I will write this as mod of sec theta into mod of tan theta. Now here condition क्या है? 0 less than theta less than pi by 2. 0 less than theta less than pi by 2. So therefore sec theta is greater than 0. Tan theta is greater than 0. So therefore mod of sec theta will be sec theta and mod of tan theta will be tan theta. एग्जाम में आपको ये लेफ्ट साइड कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद आपको सीधा लिखना है 0 less than theta less than pi by 2. तो you can avoid whatever I have over here. आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 sec square theta tan theta d theta है और 0 less than theta less than pi by 2 है. So square root of sec square is mod sec is positive. So sec theta square root of tan square is mod tan theta. 0 less than theta less than pi by 2 is positive. So tan theta, because just mention the reason, 0 less than theta less than pi by 2. Finished. Simple. एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो गया. So I is integration sec sec tan tan gets cancelled 2 times sec theta d theta. So I is 2 times integration of sec theta d theta. Now what is integration of sec theta for subjective equation? Log of mod of sec theta plus tan theta. Log of mod of sec theta plus tan theta. So I is 2 times log of mod of sec theta plus tan theta plus c. Now to the base e, it's obvious. To the base e. Now sec square theta कितना था? sec square theta था x minus 1 था sec square theta. X minus 1 था sec square theta. So sec square theta here. Now sec square theta था x minus 1 and tan square theta था x minus 2. So therefore sec theta positive square root 0 less than theta less than pi by 2 will be positive square root of x minus 1 and tan theta will be positive square root of x minus 2 because positive 0 less than theta less than pi by 2. Substitute कर दो, आ जाएगा आंसर. I is 2 times log of mod of sec theta कितना है? sec theta plus tan theta. So square root of x minus 1 plus square root of x minus 2 plus c. Finished. That means this is answer is 2 times log of mod of yes. Perfect. So you saw पैरेलल टाइप सेम थे और ये टाइप थोड़ा अलग था और इसको सॉल्व करने के लिए I had to apply the trigonometric substitution. Now let us solve. अब आपको पता है कि मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec x फॉर सब्जेक्टिव मोड के लिए क्या दिया था? log of mod of sec x plus
tan x प्लस c मोड्स के लिए। और एमसीक्यू और जेई के लिए मैंने आपको एक दूसरा रिजल्ट दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is log of mod of tan of log of mod of tan of I by 4 plus x by 2 plus c। ये मैंने किसके लिए दिया था आपको? मेंस के लिए या एमसीक्यूज के लिए। यू कैन से यस एमसीक्यूज। तो उसमें ये मेंस का एग्जाम भी आ जाता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ आपको पता है व्हाट इज cosec x is, which is log of mod of cosec x minus cot x plus c। This is for boards। Okay, subjective one, MCQs and कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने आपको रिजल्ट क्या दिया था? log of mod of tan of x by 2 plus c। ये आपको याद रखना चाहिए था। MCQs and mains ऐसा है तो याद रखो। MCQs and JEE के लिए तो MCQs और JEE और ये बोर्ड्स में लिखा है मतलब सब्जेक्टिव पार्ट में। ओके नाउ अगर मेंस में एक टाइप मैंने आपको सिखाया था 1 upon linear in cos, 1 upon linear in sin x, 1 upon linear in sin x and cos x। तो हमने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था? let tan x by 2 is equal to t। उसमें फिर dx कितना आया था? ओके let me solve one more question so that you will understand। So okay, so I is equal to integration of 1 upon cos x plus root 3 sin x dx। ओके 1 upon ओके ये क्वेश्चन होगा और इसमें ऑप्शंस में आंसर log of mod of sec x plus tan x के फॉर्म में नहीं होगा और log of mod of cos x minus cot x के फॉर्म में नहीं होगा। और ये क्वेश्चन होगा मेंस में आपको पूछा होगा ये क्वेश्चन। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन। आई विल सॉल्व टू क्वेश्चंस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हियर डिनोमिनेटर क्या है? हियर डिनोमिनेटर इज cos x plus root 3 sin x। कौन से फॉर्म में है? इज इक्वल टू a cos x plus b sin x। मतलब 1 अपॉन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन a cos x plus b sin x। तो हियर so here comparing what is coefficient of cos x? A। Either coefficient of cos x A is 1, either coefficient of cos x is a, either coefficient of cos x is 1। what is coefficient of sin x? B। either coefficient of sin x root 3, so A is 1 and B is root 3। so denominator कौन सा फॉर्म है? A cos x plus B sin x। okay equating कर दो, that's better। now तो सबसे पहले r निकालने का फिर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, सो कितना आया? 4 which is 2। सो r निकाल देंगे a cos x plus b sin x, so r is 2। so r is 2। अब क्या करने का? इस क्वेश्चन को लिखने का और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r is equal to 2 करने का। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r is equal to 2। ठीक है? सो therefore I लिखो I कितना है? 1 upon cos x plus root 3 sin x dx। question will be asked in mains। this is the question asked in the year 2007। okay so I is 1 upon cos x plus root 3 sin x। तो डिनोमिनेटर कौन सा फॉर्म है? a cos x plus b sin x। तो a is 1 coefficient of cos x 1 a cos x plus b sin x। so what is coefficient of cos x? A is 1 and what is coefficient of sin x? B is root 3। r निकालने का root of a square plus b square, r is 2। so multiply and divide by r is equal to 2 in denominator। so I कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे okay multiply and divide by r is equal to 2 in the denominator। तो I कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 में इधर लिख रहा हूं और इधर मैंने लिखा cos x into half plus sin x into root 3 by 2। okay cos x
into half plus root 3 sin x into half. Fair enough. 1/2 constant outside वो बाहर चला जाएगा. So half I is half into integration of 1 upon. Okay, now this question becomes cos x into 1/2 plus sin x into root 3/2. Now see what is the trick. इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, पर ऑलवेज प्रिफर कि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आना चाहिए sin of x plus y या cos of x plus y. डिनोमिनेटर में ट्राई करने का फॉर्मूला आना चाहिए sin of x plus y, cos of x plus y. उस हिसाब से ये root 3/2 और 1/2 को स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में लिखने का. So can I write this as sin x into root 3/2 plus cos x into half 1 dx. Now what is root 3/2? Root 3/2 is cos of pi by 6, which is cos 30, cos of pi by 6, and half is sin of 30 degree, which is sin of pi by 6 here. So sin x cos y plus cos x sin y. You understood? आप दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो. You can go with sin of pi by 3, cos of pi by 3. That is also allowed, but I prefer this way. So I is half into integration of 1 upon कितना आएगा sin x into what is root 3/2? Root 3/2 is cos of 30 degree. Cos 30 degree is sin x. Yes, cos 30 degree. So cos of pi by 6 plus cos x into sin of pi by 6. What the formula होगा डिनोमिनेटर 1 upon cos x sin y 1 upon sin x cos y plus cos x sin y. तो सीधा फॉर्मूला 1 dx है. So therefore now sin a cos b plus cos a sin b is sin of a plus b. Easy रहता है. So I is half integration of 1 upon sin of x plus pi by 6 1 dx upon. What is 1 upon sin? 1 upon sin is cosec x. 1 upon sin is cosec x. So 1 upon sin is cosec x. So you understood? ये मैं कैसे solve करना हूँ? So this becomes 1 upon sin is cosec x. So this becomes I becomes half into integration of cosec of x plus pi by 6 dx. X plus pi by 6 dx. So I is half into integration of cosec of x plus pi by 6 dx. Now what is integration of cosec x dx? Integration of cosec x dx is log of mod of tan of x by 2 for MCQs. Now integration of cosec x dx is log of mod of tan of x by 2 plus c to the base e. It's understood? मतलब cosec x है तो x का आधा x by 2. तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है? x plus pi by 6. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हाफ इनटू log of mod of tan of x by 2 नहीं, half of x plus pi by 6. Yes, plus c to the base and then multiply that with the final answer. सीधा आंसर आएगा. This is given in the theoretically JEE mains में आएगा. And this is a very popular question which comes in, you can say, entrance exams for IIT also. So I is 1/2 into log of mod of tan of log of mod of कितना आएगा? x by 2 plus pi by 2. x by 2 plus pi by 12 plus 6. Finished. X by 2 plus pi by 12 plus 6. Finished. So that's the final answer. Let me check the answer. 1/2 log of mod of tan of x by 2 plus pi by 12. You will get the answer which will be in the option for JEE mains or any other such entrance exam. It is a standard 3 or 4 mark question. Okay. Now same type और equation solve करते हैं. Let us solve two more such questions. Integration of I is integration of 1 upon cos x minus sin x dx. तो denominator here denominator कितना है? cos x minus sin x. कौन से फॉर्म
therefore a coefficient of x क्या है, coefficient a is coefficient of cos x 1 और b क्या है, coefficient of sin x along with the sin, तो वो b क्या आएगा -1, so therefore a is 1, b is -1। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, r is root of a square plus b square। what is the square of 1 -1 का square 1, don't write -1, 0 नहीं आएगा, root 2, therefore r is root 2। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अब लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r जो root 2 है 1 upon cos x minus sin x dx, so therefore multiply and divide by r equal to root 2 in denominator, ठीक है, क्लियर। तो cos of this will be, so therefore I will become I is integration of 1 upon, मैंने यहाँ पे लिखा root 2 into cos x into 1 by root 2 minus sin x into 1 by root 2 dx। Now I told you कि मुझे डिनोमिनेटर में I will prefer the formula of cos of a plus b or sin of a plus b, so cos x half 1 by root 2 minus sin x into 1 by root 2, so definitely 1 by root 2 और 1 by root 2 मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे मैं cos में सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे मैं sin में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो डिनोमिनेटर cos of a plus b में कन्वर्ट होगा। नाउ ये जो है 1 by root 2, that I will substitute as cos of 45 degree which is cos by 4, and this 1 by root 2 with the sin I will substitute as sin of 45 degree which is 1 by root 2, so I becomes ये root 2 outside of the integration into integration of 1 dx upon cos x into cos of pi by 4 minus sin x into sin of pi by 4, finished। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, cos a cos b, cos a into cos b, cos a into cos b upon sin a into sin, sorry, cos a into cos b minus sin a into sin b is cos of a plus b। तो इधर जो डिनोमिनेटर है, नाउ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos a cos b minus sin a sin b, वो क्या होता है, cos of a plus b, so therefore I इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 by root 2 integration of 1 upon cos of x plus pi by 4 dx, so therefore I is 1 by root 2 integration of sec of x plus pi by 4 dx। अब आपको पता है what is integration of, you know what is integration of sec x dx for MCQs, log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2 which I have given you। what is integration of sec x dx, what is integration of sec x dx, log of mod of integration of sec x dx क्या था, log of mod of tan of log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2 log of mod of, okay, so integration of for MCQs, okay, integration of sec x क्या था, integration of sec x क्या था, now integration of sec x कितना था, integration of sec x dx था log of mod of not the sec x plus tan x जो मैंने मेंस के लिए दिया था, तो और ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर आईआईटी एडवांस आल्सो। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2 plus c और फिर तो बेस e, सो I कितना हो जाएगा 1 by root 2 into log of mod of tan of pi by 4 plus sec x pi by 4 plus half of x, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे sec of x plus pi by 4 sec x है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, उससे डिवाइड करना भूल गया, पिछले क्वेश्चन में ऐसा भूल गया, मैं डायरेक्टली फ्लो में था कि कोएफिशिएंट तो 1 ही है। सो पहले इट इज sec x, इट इज sec of x plus pi by 4, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x 1, अगर यहाँ पे 2x होता या 3x होता तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करता, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, सो 1 upon 1 into 1 upon 2 into log of tan of pi by
हाफ ऑफ sec x, तो पाई बाय 4 प्लस हाफ ऑफ x, तो यहाँ पे क्या है x प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4, so half of x plus pi by 4, perfect, plus c, so I becomes 1 by root 2 into log of mod of tan of pi by 4 plus x by 2 plus half into pi by 4 is pi by 8, yes, plus c, so pi by 4 plus pi by 8 कर दो, which will be 3 pi by 8 if I am not wrong. Yes, 3 by 8, so that must be the answer. Okay, so I is 1 by root 2 into log of mod of, और हाँ यहाँ पे to the base e आप लिखो to the base e और finally वो base e आप बनाओगे तो भी चलेगा, tan of x by 2 plus pi by 4 plus pi by 8 plus c, इन दोनों को ऐड करो, what is the LCM of 4 and 8? LCM of 4 and 8 is 8, so I is 1 by root 2 into log of mod of tan of x by 2 plus 8, 4 2s are 2 pi plus pi plus c. You can skip the step. यहाँ से सीधा आंसर ले सकते हो, मेरे साथ लिख जाए राइट. I is 1 by root 2 log of mod of tan of x by 2 plus 3 pi by plus yes. This must be the answer. Yes. 1 by root 2 log of mod of tan of x by 2 plus 3 pi by. This question was asked in IIT screening around say 2005 or 2010. And the same question was asked in AIEEE. This was asked in AIEEE 2004. And the same question was asked in, you can say, JEE mains in 2014 or 17 in online examination mode. There were two books, online और offline. Offline में था, online papers में भी आ चुका है JEE mains. उसके पहले वाला क्वेश्चन उसमें आ चुका है ना. Okay. अब let us solve the more question. This is a very nice question. Just 1 minute. So you have finished now. Suppose the question is I is 1 upon square root of cos square of 140 degree minus x square dx. Suppose a question. One mark is okay. So शुरू क्या करेंगे? Square root of इसको लिखेंगे cos of 140 degree का square minus x का square dx. Now आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओके, ये कौन से फॉर्म में है? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. एक ही जगह पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ही जगह पे cos ऑफ 140 डिग्री दिख रहा है. 140 डिग्री उसमें 140 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव है. सो हियर कंपेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx which is equal to integration of 1 upon square root of a का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर dx फॉर्म इस फॉर्म में है. ओके, तो एक ही जगह पे हियर एक ही जगह पे क्या है? cos of 140 as 90 degree is less than 140 degree, less than 180 degree. Cos of 140 degree is less than 0. Second order cos negative होता है, therefore a is equal to cos of 140 degree is less than 0. मतलब यहाँ पे a is less than 0. तो मैंने आपको क्या बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx फॉर a ग्रेटर देन 0 में होता है sin इनवर्स ऑफ x बाय a, बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका आंसर होता है माइनस sin इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस
साइन इनवर्स ऑफ x by a plus c या होगा cos इनवर्स ऑफ x by a plus c। अंडरस्टूड? तो यहां से ये क्वेश्चन क्या आएगा? cos ऑफ, therefore I is, तो हमारा क्वेश्चन है 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 140 डिग्री का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 1x। So it is the form of a is less than 0. A is less than 0. So since a is less than 0, I आएगा okay minus sin inverse x upon cos of 140 डिग्री plus c। और हाँ sin inverse x plus cos inverse क्या होता है? pi by 2। तो sin inverse की जगह पे आप माइनस cos inverse दे दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो I will be, ये का आंसर हो सकता है। So one mark question minus cos inverse x upon cos of 140 डिग्री plus c। तो I कितना आएगा? दूसरा आंसर cos inverse of x upon cos of 140 degree plus c। These two answers are possible। Clear? आपको याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ की समीकरण मैंने दे दिया, आपको ये रिजल्ट क्या रखना है? एट गिवन लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square dx for a greater than 0 you must remember in sin inverse of x by a plus c और sin inverse की जगह पे minus cos inverse because sin inverse x plus cos inverse x क्या होता है? pi by 2। so sin inverse को रिप्लेस करने का minus cos inverse से। और सेम वे अब याद रखो कि जब a less than 0 होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon square root of a square minus x square dx when a is less than 0 तो आंसर आएगा पहला आंसर a less than 0 में dx when a is less than 0 that answer will be cos inverse of x by a plus c or you can also write minus sin inverse x by a plus c। हम ये केस कर a less than 0 and the question which was asked is one of the AIEEE exams and you can say mains math I believe in 2015 or 16 online right 15 या 16 में online paper में and it has also come in one of the entrance exams so I is integration 1 upon square root of log of half का square minus x square dx। Okay, this is a question asked. This is a very easy question in fact come. Okay, and this is a very common MCQ for group city also. State entrance exam for 1 month. But this question was asked in IIT as well as JEE Mains. In one of the entrance exams, in one of the online examinations when JEE Mains were introduced in 2013. I believe in 14 or 15 में ये पूछा था. Maybe 15, right? Okay. So here, अगर आप comparing integration of 1 upon square root of a square minus x square dx equal to integration 1 upon square root of a का square minus x का square। So a की जगह पे क्या दिख रहा है? a की जगह पे log of half दिख रहा है। Yes or no? Yes। Now 1 by 2 0 और 1 के बीच में है। Okay, suppose डायरेक्ट नहीं पता a पॉजिटिव है नेगेटिव। So कहना है a is log 1 to the base e minus log 2 to the base e। So a कितना है? Log 1 is 0। So 0 minus log 2 to the base e। तो a आया minus log 2 to the base e। So a which is minus log 2 to the base e is less than 0। log 2 to the base e कैसे होता है? Positive। As log 2 to the base e is greater than 0, a is minus log 2 to the base e is less than 0. So here a is less than 0. So integration of इसके आंसर्स लिखने में काफी स्टूडेंट्स को तकलीफ होगी। So therefore integration of रिजल्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया वो लिख दो a square minus x square 1 dx when a is less than 0। तो पहले क्या आएगा आंसर? when a less than 0 में c
सीधा लिखो cos inverse x by a plus c, or you can also write minus sin inverse x by a plus c, minus sin inverse x by a plus c। तो ये क्वेश्चन I जो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log of half to the base b का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 1 dx, ओके, और यहाँ पे a which is log half to the base e is less than 0। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। Can I write cos inverse of x by a? Can I write that as cos inverse of x by a? So इसके दो आंसर आएंगे। So cos inverse of x by a, just one minute, इसका आंसर आएगा so I is cos inverse of x by a, अगर मैं लिखूं या minus sin inverse of x by, that is also allowed, so I will prefer sin inverse only, so minus sin inverse of x upon log of half to the base e plus c, this to be one of the answers, पर ये आंसर नहीं था, so therefore I is minus sin inverse of, okay, what is log half? Now log of a by b, log of a by b to the base e is minus log of b by a to the base e, so therefore ये आंसर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा minus sin inverse of x upon, what is log of 1 by 2, minus log, yes, plus c, so therefore I becomes minus sin inverse of minus x upon log 2 to the base e plus c। Now what is sin inverse of minus x? This sin inverse of minus x is minus sin inverse of x, capital X की जगह पे x upon log 2। तो the one mark question, okay, for good CT MCQs, and this question was asked in one of the IIT screening exams previously, I believe in 2007 or 10, and same question had come in good CT also in 2008 and 10. This question was asked in AIEEE as well as JEE Mains in online paper। So I is online examination last 2019 से offline चला गया है 2019 से, okay, so minus what is sin inverse of minus x, minus sin inverse of x, तो पहले minus का साइन यहाँ पे रहेगा और फिर मैं लिखूंगा minus of sin inverse of x upon log 2 to the base e plus c minus minus plus, so final answer I is the option में था sin inverse of x upon log 2 to the base e plus c, और मैक्सिमम इसको और एक सिंपलीफाइड आंसर क्या हो सकता है, व्हाट इज sin इनवर्स ऑफ, sin इनवर्स का आंसर नहीं है तो cos इनवर्स का log 2 है तो sin इनवर्स को रिप्लेस करने का माइनस cos इनवर्स, सो माइनस बिकॉज़ sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स क्या होता है पैरेलल, सो माइनस ऑफ डायरेक्टली cos इनवर्स ऑफ x upon 2 plus c। You don't have to bother c dash and all that stuff, where c dash you will write pi by 2 plus c and all that stuff, right? So these two are the answers, yes, sin inverse of x upon log 2 plus c or minus cos inverse of x upon log 2 plus c। Just 1 minute, let me see if I can solve one more question। So these two questions are now clear to you। जब a less than 0, so ये एक MCQ जो मैं आपको नहीं करवा पाया था, सीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज I is integration of 1 upon square root of 1 plus sin x or 1 plus sin x raised to half, 1 plus sin x raised to half dx, and you write 0 less than x less than pi by 2, go for it, 0 less than x less than pi by 2, that is mentioned, so write 0 less than x less than pi by 2, 0 less than x less than pi by 2, this was also asked in theoretically। This is the next question, so I will keep this question as last question for today। So I is 1 plus sin x raised to half, can I write this as raised to half मतलब 1 plus sin x 1 dx, 0 less than x less than pi by 2 है, so I is integration of 1 upon
terms of some multiples. 2 sin x by 2 cos x by 2. So this I can write as I is integration of 1 upon square root of 1 plus 2 sin x by 2 cos of x by 2 dx. So therefore, now what is 1? Sin square theta plus cos square theta. So I will write this as 1 upon square root of sin square of x by 2 plus cos square of x by 2 plus 2 sin of x by 2 cos of x by 2. Okay. See, these are all typical questions. Matlab not very tough. Average questions, standard questions which can come. It covers all the times. A square plus b square plus ad is a plus b the whole square. So sin of x by 2 plus cos of x by 2 the whole square. Now, what is root of a square? Root of a square is mod a, and this is a very nice question. Now, root of a square is mod a. So this becomes sin of x by 2. So I becomes integration of 1 upon mod of sin of x by 2 plus cos of x by 2 dx. Okay. So 0 less than x less than pi by 2 है. तो 0 less than x by 2 less than क्या हो जाएगा? See, 0 less than x less than pi भी हो सकता है. 0 less than x less than pi भी हो सकता है. But here we have gone for 0 less than x less than pi by 2. So therefore मुझे x by 2 का चाहिए. So multiply by half, which is positive. No change in the inequality. 0 into half is 0 less than x by 2 less than pi by 2 into half is pi by 4. Half से multiply करो. 0 into half is 0. Less than because positive number से multiply कर रहे हैं. Inequality change नहीं होगी. So 0 less than x by 2 less than pi by 4. 0 to pi by 4 first quadrant. So sin of x by 2 is positive. Cos of x by 2 is positive. It is positive. ठीक है. Since it is positive, so sin of x by 2 plus cos of x by 2. Positive plus positive क्या होता है? Positive. तो modulus of a क्या होता है? A when a is greater than 0. So therefore modulus of sin of x by 2 plus cos of x by 2 will be sin of x by 2 plus cos of x by 2. Why? Because mod a is plus a for a is reduced. Because modulus of a is a for modulus of a is a, because modulus of a is a for a greater than 0. So therefore I क्या हो जाएगा? I हो गया integration of 1 upon sin of x by 2 plus cos of x by 2 dx. कौन सा फॉर्म है? It is in the form of a cos x plus b sin x only. It is in the form of a cos x plus b sin x only. So denominator क्या है यहाँ पे? Denominator is sin of x by 2 plus cos of x by 2, and you can write denominator is cos of x by 2 plus sin of x by 2. So that you can compare with a cos theta b sin theta, or you can say a cos x plus b sin x. It is in the form of a cos of x by 2 plus b into sin of x by 2. So therefore a कितना है? cos of x by 2 कोएफिशिएंट a इधर कितना है? 1. b कोएफिशिएंट ऑफ sin of x by 2 इधर b क्या है? 1. तो r निकालो. r is root of a square plus b square, which is square root of 1 का square 1, 1 square 1, so root 2. so r कितना है? r is root 2. तो क्या करेंगे? I को और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r is equal to root 2. ठीक है? Right? So therefore I is integration of question 1 upon sin of x by 2 plus cos of x by 2 dx. So what do we do? This becomes I becomes integration of multiply and divide by r is equal to root 2 in
denominator multiply and divide by r is equal to root 2 in the denominator. तो I is equal to integration 1 upon root 2 मैंने इधर लिखा और 1 upon मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ sin x into 1 by root 2 plus cos x into 1 by root 2. I would have understood what is going to happen. Is 1 by root 2 को denominator I always prefer to get the formula in which form. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1 upon linear in cos x and sin x JEE मेंस में या 1 upon a cos x plus b sin x और JEE मेंस में क्वेश्चन होगा तो what I will do आगे का मल्टीप्लाई डिवाइड और नीचे में प्रेफर करूंगा फॉर्मूला sin of a plus b और cos of a plus b. So 1 by root 2 sin के साथ जो 1 by root 2 है उसको मैं लिखूंगा cos of 45 डिग्री which is cos of pi by 4 और cos के साथ जो 1 by root 2 है उसको मैं लिखूंगा sin of 45 डिग्री which is sin of pi by 4 constant 1 by root 2 outside integration 1 upon easy sin of see I made a mistake x by 2 sin of x by 2 into 1 by root 2 plus cos of x by 2. See, these are some standard mistakes जो students करते हैं. Okay. So sin of x by 2 into cos of pi by 4. 1 upon plus cos of x by 2 into sin of pi by 4. 1 dx. Denominator क्या है? Sin a cos b plus cos a sin b is sin of a plus b. तो कितना आ जाएगा 1 upon be very careful काफी अच्छा रिजल्ट है और इसमें आपको एक चीज और सीखने को मिलती है जो आप काफी छोटी मिस्टेक करते हैं. So I is 1 by root 2 integration of 1 upon sin of x by 2 plus pi by 4 dx. What is 1 upon sin theta? What is 1 upon sin theta? Cosec x. So 1 upon sin का इंटीग्रेशन क्या है? Therefore, I is 1 upon root 2 integration of cosec of x by 2 plus pi by 4 dx. Integration of cosec x dx for MCQs of JEE mains log of mod of tan of कितना था x by 2 plus c to the base e. यहाँ पे x की जगह पे क्या है? x की जगह पे x by 2 plus pi by 4 है और हाँ x की जगह पे x by 2 plus pi by 4 है पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है इधर x का कोफिशिएंट हाफ है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में इफ यू कैन रिकलेक्ट आई विल वहां कुछ था sec of x plus pi by 6 और कुछ था cosec of x plus pi by 6. हाँ इधर I is ln है 1 by root 2 लिख रहा हूँ. See how I am solving this now. I is ln 1 by root 2 1 by root 2 because ये है अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cosec of x x का क्या होता है x by 2 आधा. यहाँ पे x की जगह पे पूरा क्या है x by 2 plus pi by 4 पर what is coefficient of x half तो पहले उसे डिवाइड करना पड़ेगा. So 1 upon half into log of mod of tan of half of x by 2 plus pi by 4 x by 2 plus pi by 4. Okay, 1 over plus 6. Yes, ये 2 ऊपर चला जाएगा और log to the base e आपको to the base e लिखने की जरूरत नहीं है. So I is 1 by root 2 into 2 into 2 students dividing by the coefficient of x नहीं करेंगे और उनका आंसर गलत आएगा. कितना हो जाएगा x by 4 plus don't write pi by 2 it's pi by 4 into pi 4 into 8 so pi by 8 plus c. So final answer is I is root 2 आपने का डिवाइडिंग किया तो 1 by root 2 into log of mod of tan of x by 4 plus pi by 8 plus c. So this answer is question this 1 by okay root 2 into log of mod of tan of pi by 8 plus x by 4 plus c. This question again was asking you can say one of the
online examinations of JEE mains in 14, 15 और 16 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है और एक्स को मुझे 1/2 से डिवाइड करना काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे उतना सॉल्यूशन 1/2 भी होता है 1/2 की देते हैं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का आंसर गलत आता है सो दिस इज द फाइनल आंसर यू अंडरस्टूड और कौन सा रिजल्ट यूज किया इंटीग्रेशन ऑफ cosec dx राइट सो दैट फिनिशेस you can say majority, you can say 95% of all the subjective types which can come in your boards as well as JEE mains and MCQ which can come in your boards and good CET I have solved. That finishes the integration and now I will be starting with the two important chapters which I will be finishing is vectors and 3D. Both are important, they are average chapters, not tough, not easy, but you need to practice with me on daily basis 2 times. मैं एक बार कराता हूँ तो वही चीज आप 2 बार प्रैक्टिस करो पक्का हो जाएगा. So that's for today. Thank you. Work hard. Take care. Don't waste time. Study well and take care. Don't waste your time now because now only 4 or 5 months your exams are going to be in May. तो आपको मेजॉरिटी सिलेबस का रिवीजन फरवरी तक हो जाना चाहिए. आपका एक बार पूरा कोर्स फरवरी तक हो जाना चाहिए so that you can revise your the physics, chemistry, maths in this March and April. 2 months revision is required, not 1 month revision. Okay, so be very very sincere. Don't waste your time and work hard for January, February, and the 3 weeks of December. Right? So that's it for today. Thank you.